अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और शानदार टेक्निकल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं अभी हूँ मारुति सुजुकी एरिना शोरूम के पास मेरे नई कार डिलीवरी लेने आया हूँ और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई। तो चलो अंदर चलते हैं हम। फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर मेरे कार एक्सिस फिटिंग हो रही है, तो चलो ऊपर दिखाता हूँ आपको हमारे नई कार। ये हमारा न्यू कार विटारा ब्रेजा जेटी ऑटोमेटिक वर्जन। इस पर अभी आपकी फिटिंग चालू कर रहे हैं, तो इसका व्यू आप देख लीजिए। तो आप इसका वॉक अराउंड दिख लिया है। एज यू कैन सी इसमें अंदर सीट कवर्स का काम चल रहा है। गाइस आप देखिए ना, इसे पूरा वॉक अराउंड। ये जेटी प्लस टॉप एंड मॉडल है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारे एक्सेस दिलाना पड़ेगा। उसका एक्सेस प्राइस भी आपको मैं कार डिलीवरी लेने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो आप देखिए इसमें कुछ भी एक्सेस लगा के नहीं है एक्सटीरियर में, लेकिन कभी लेने के बाद आपको फाइनल आपको दिखाऊंगा, तब इस पर काफ़ी सारे एक्सेस लगा के आपको दिखाने वाला हूँ मैं। आप देखिए तो डोर हैंडल से भी कुछ फोन एक्सेस भी नहीं है, स्पीकर भी कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी सब मिला के 40,000 का आपको एक एक्सेस पैक मिलेगा। वो लगाने के बाद आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आएगा। लगाने के बाद आपको मैं दिखाऊँगा। ये ब्लॉग शूट होने में काफ़ी सारा हेल्प किया है मेरा छोटा भाई अरशद शेख ने, उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। और मेरा दूसरा भाई नीचे वेटिंग लॉन्च में बैठ के, उसके भी मैं आपको बाद में मिलाऊंगा ब्लॉग में। If you stand me, shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. गाइस अब मेरे पीछे नई मॉडल इर्टिगा कार है, तो अंदर चलो इसका इंटीरियर एक बार चेकआउट कर लेंगे। but I'm sure it
ये सिटी का कार का स्मार्ट की है। इंटीरियर देख लो एक बार आप। इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी छोटा है। If you stand me, shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go. स्टीयरिंग और कंट्रोल भी दिया गया है। नीचे देखें तो आप इसमें आपको ग्लो यूनिट मिलेगा, लेकिन ये AC यूनिट नहीं है। तो भाई टेक ऊपर को आप दिखाओ इस पीछे AC यूनिट देखिए, स्क्रीन मिलता है। तो काफ़ी अच्छा वुड फिनिश दिया गया है और AC यूनिट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कार उतना लुकिंग नहीं है। गाइस शाम के 6 बज गए हैं और हमको काफ़ी सारा रोज़ा लग रहा है, और भी ऊपर 2 घंटे पकड़ेगा, लेकिन ऊपर काफ़ी सारा हीट है, उसके लिए हम नीचे आ गया। इधर थोड़ा AC भी है और एक हाफ एन आवर है रोज़ा खोलने के लिए, तो इधर ही हम रोज़ा खोल लेंगे। और हमारे भाई अभी इधर बैठ के हैं, इन लोगों भी काफ़ी रोज़ा रख रहा है, और एक दूसरा भाई उधर बैठ के कोने में बैठ के। तो टाइम पे अपडेट देते रहूँगा, फिर मिलेंगे। गाइस रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, और इधर कुछ भी नहीं है रोज़ा खोलने के लिए, तो सिर्फ पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। और 1 मिनट बाकी है, तो हम आज पानी से ही रोज़ा खोल लेंगे। आया कहते फोन अब पूछा आया नहीं बोले। अब हमारे साथ और 2 साथी जुड़ गए,
जब देखे तो मेरे बड़े भाई बैठ के है और इधर हमारे बड़े भाई जैसे ये इनका नाम है रवि। ये काफ़ी अच्छे नॉलेज है मोटर फील्ड में इन्हें। आप इनको बर्गर ब्लॉक में भी देखे थे वही ये था। तो हो जाने है कार का एक्सिस का काम। तो चलो ऊपर जाके देखेंगे। इट्स 8 o'clock तो कार फाइनली बाहर आ गई। तो चलो देखेंगे कार को। If you stand me, shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes, I तो take 8:30 होने वाला है। लास्ट साइन करने जा रहा हूँ। तो चलो लास्ट साइन करके देखेंगे कार को। I think she knows that, but I'm show it out. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it out. So shimmy out, पूरा साइंस कंप्लीट हो गया। अब डिलीवरी का वक्त आ गया। तो चलो डिलीवरी लेंगे। stand me.